Hello everyone, welcome back to the political science lecture series on Nearpeer. And today we're going to discuss the difference in the philosophy of Plato and Aristotle, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था. इस पे कभी कभी डिफरेंट तरीके से सवाल आते हैं, कंपैरिजन का सवाल आता है, कभी कभी एक बड़ी रिटोरिकल सी स्टेटमेंट आती है. एंड आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय वेरियस स्टूडेंट्स आस्किंग मी कि इस सवाल में क्या लिखना है. द स्टेटमेंट इज दैट एरिस्टोटल इज अ ग्रेट बट नॉट ग्रेटफुल या अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब यह है कि आपने वो डिफरेंसेस बताने हैं जो अरिस्टोटल और प्लेटो की फिलॉसफी में है. सो लेट्स जंप टू दिस क्वेश्चन. अगेन, इसमें जब भी सवाल अगर इस तरह आता है तो प्लेटो के ऊपर जो हमने चार्ट अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया, पहले आप वो ड्रॉ करें, फिर अरिस्टोटल का जो चार्ट हमने कवर किया वो ड्रॉ करें. इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो फ्लो चार्ट दोनों के अलग ड्रॉ करें. सो इन द मेन बॉडी देयर आर डिफरेंट differences and different aspects between Aristotle and Plato. The first is in, broadly speaking, in philosophy, their philosophical conceptions or their worldviews. So Plato was an idealist, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया. So his idealism was that he believed in the concepts of universal forms, जिसको वो theory of forms कहते हैं. ये हमने डिस्कस प्लेटो में नहीं किया था बिकॉज इसका पॉलिटिकल फिलोसफी से while there is a connection, but this was not the most important component. और पेपर में भी इससे कभी कभार शाज़ो नादिर कोई बात आती है जो हम यहाँ कवर कर लेंगे. I'll also attach a video link to that effect कि ताकि आप इस पे particularly अगर आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ लें. But the basic idea is कि if there is this pen which is black in color, this is not the real form of black. Plato thought that this is just a form of black. In actuality, black as a color exists in the abstract world. This black color only participates in the blackness, in the actual blackness to that effect. वही philosopher king वाला idea कि because philosophers are able to comprehend the real reality and the truth of everything, this world and everything in it is merely a form of that realness, जो कि उस prisoner को escape करके बाहर नजर आता है दुनिया में, जो कि आम बंदों को सिर्फ shadows नजर आ रही होती हैं. So whatever we are seeing from our senses, because again connect this with this idea that Plato was against empiricism. He believed कि senses deceive humans. तो हम जो empiricism यानी अपनी senses से जो चीजें देख रहे हैं, which is this black color, is not the real black. This is just a form of black. And जो philosopher होगा असल, according to Plato, he knows the actual black color in which this blackness participates. It's a very moral, abstract, spiritual idea. इसीलिए people in modern world have trouble making a connection to that effect, which is understandable. As against this Platonic idealism, you have Aristotelian empiricism. Again, Aristotle believed कि जो आपकी real world चीजें हैं, practically आपकी senses आपको दिखाती हैं, वो important होती हैं. वो direct observation से आपको reality का पता चलता है. ये moral reasoning और abstract reasoning के जरिए नहीं पता चलता. प्लेटो के नज़दीक rationalism, यानी कि अगर आप सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट करें, आप सिर्फ कनेक्शंस बनाएं, आर्म चेयर फिलोसोफाइजेशन भी इसको कह सकते हैं आप, कि आप आर्म चेयर पे बैठ के तो आप कॉम्प्रिहेंड करने की चीजें को कोशिश करें विदाउट डायरेक्टली ऑब्जर्विंग देम. तो यू अकॉर्डिंग टू प्लेटो यू कैन डू दैट एंड यू कैन रीच ट्रुथ. बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, he believed that direct observation is more important than armchair philosophization. Both of them, because both of them are philosophers, ancient Greek philosophy में mind की बहुत अहमियत थी, तो both of them believed in the superiority of mind over senses. However, difference was that Plato believed that senses could fool a person and we should not rely on senses. And philosophers, people who have their rational part as their most superior part, have their senses subordinate to their minds. और senses क्योंकि इंसान को गुमराह कर देती हैं, again क्योंकि वो prisoners सेंसेस के जरिए ही अपनी देखने की सेंस के जरिए शैडोज को रियल समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं थी. तो वो जस्टिफाई करता है प्लेटो इसको इस तरीके से. बट एरिस्टोटल बिलीव्स दैट सेंसेस आर नीडेड in order to properly determine reality along with mind. In logic, Plato was Socratic, जिसको inductive method of reasoning कहते हैं. Socratic method ये था कि basically the idea of asking questions and different questions and then discovering the answer. So for instance, if a person asks me, why are you doing a particular thing? जैसे कि आप Nearpeer का कोर्स क्यों पढ़ा रहे हैं? तो in a Socratic method, I will ask, why is teaching important? Why is CSS important? Why is CSS important using online platform?
तो आई एम आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस जिनके जब दूसरा बंदा आंसर देगा तो ऑटोमेटिकली डिड्यूस होता जाएगा, उसके नतीजे में आंसर निकलता जाएगा. सो यू आर डिफरेंट पीपल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस निकाल के उनको आप आंसर करते हो. सो दैट्स अ सॉक्रेटिक मेथड. बिकॉज जिसका टीचर सुकरात था, सोक्रेटिस, ही यूज्ड दिस मेथड इन हिज ट्रेनिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज वेल, वन ऑफ विच हैपेंड टू बी प्लेटो हिमसेल्फ. इंडक्टिव मेथड ये होता है कि इसके अंदर आप बेसिकली यू स्टार्ट विद अ लार्जर आइडिया और आप लार्जर आइडिया से आप यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर आइडिया सॉरी एंड यू रीच अ लार्जर आइडिया. तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की छोटी मोटी एंड देन आई जनरलाइज इट के दुनिया में इसी तरीके से. सो फॉर इंस्टेंस इफ आई सी 3 black pens in my life and I infer from this that all pen are black, that is inductive reasoning. कि मैंने एक छोटे सबसेट को ऑब्जर्व किया या देखा या उसको समझा और उसको मैंने जनरलाइज कर दिया लार्जर सबसेट पे. सो फ्रॉम अ स्मॉलर सबसेट टू अ लार्जर सेट. एरिस्टोटल as against this was used scientific method and deductive reasoning. In deductive reasoning you start with a larger set and reach a smaller conclusion. So for instance अगर कहा जाता है कि someone stole this black pen from my house, तो then I start with a larger set कि how many people visited my house on that day. अच्छा इतने लोगों ने किया बट ये मेरा रूम लॉक था और इसकी चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास है. तो अब हमने आहिस्ता से डिड्यूस कर लिया कि उस लार्जर सेट में से जितने भी लोग हैं उनमें से हमने इन 3 लोगों पे शक जा सकते हैं. अच्छा इन 3 के पास चाबी थी लेकिन इनमें से जो 2 थे वो उस दिन शहर से बाहर थे, तो एक बंदा बचा, इसने चोरी की होगी. तो आपने एक लार्जर सेट से शुरू किया एंड यू एलिमिनेटेड ऑल द इम्पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड यू रीच द फाइनल plausible solution. That is called deductive reasoning. This is very similar to scientific method. Scientific method में भी एक आप hypotheses बनाते हैं, उस hypotheses में broad चीजें होती हैं, उस hypotheses के against आप direct observation करते हैं, experiment करते हैं. अगर आपके फिर results निकलते हैं, if those results conform to your hypotheses, तो आपको फिर उसकी वजह से conclusion निकलता है. इसको कहते हैं आपके deductive reasoning. Scientific method. Aristotle ने syllogism develop किया था. Aristotle is credited with developing for the first time in history formal logic. Syllogism इसका basic unit था logic का. वो क्या था? If A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. इसके लिए वो एक example use करता है that all men are mortal. Statement number 1. Second, Socrates is a man. Second statement. Third statement, hence Socrates is mortal. तो it sounds very simplistic, बहुत हमें मतलब obvious लग रही है ये बात, लेकिन उसने ये basic unit of logic develop किया था that he used and applied on larger scale on scientific method in his analysis of other things. So that is his very important contribution to the philosophical world, that he introduced this concept of formal logic. Ethics के अंदर, morality के अंदर, प्लेटो के जो ethics थे, Platonic ethics, he believed कि knowledge जो है, again since he is idealistic, since he prefers mind, since he prefers wisdom, तो उसके नजदीक knowledge is the most important virtue and it's a virtue that is worth acquiring in and of itself. Knowing what is good is to do good. तो अगर आपको पता है कि सही चीज क्या है, अगर आपका knowledge है सही चीज पे, if you make an effort in knowing the good, you are actually doing the good. उसकी assumption थी कि knowing something will automatically result in that behavior. तो अगर प्लेटो के नजदीक ये मफरूजा था कि अगर आपको पता है कि एक चीज ठीक है तो ऑटोमेटिकली आप वही चीज नेसेसरीली अपने एक्शन में भी ट्रांसलेट करोगे. Hence, by that logic, he concluded के इसीलिए अगर आपने किसी को अगर virtuous बनाना है, अगर आपने किसी को सही बनाना है इंसान, तो आपको सिर्फ उसे सिखाना है कि सही क्या है. But Aristotelian ethics disagreed with them. He said that knowledge is not in and of itself. सिर्फ इस चीज का पता होना कि कोई चीज सही है गलत है will not automatically result in a right behavior, which obviously makes a lot of sense because oftentimes we and we see a lot of people who know the right thing but they don't do the right thing. So according to Aristotle, you need to create a system, you need to create a method के जिसकी वजह से लोग over time practice के जरिए उनको सिखाया जाए कि प्रैक्टिस के जरिए एक्सरसाइज करके प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो दे डू द राइट थिंग. दे knowing the right thing will not automatically result in right behavior. Again, similarly on the concept of virtue, Plato believed that wisdom is the basic virtue.
और विजडम जो है वो बाकी तमाम वर्चूज को कंबाइन करती है, बिकॉज अगर आपको की विजडम होगी, यानी विजडम है, तो आपको हर चीज का पता होगा कि अच्छी चीजें जितनी हैं दुनिया में वो क्या हैं, और आप वो सारी चीजें करेंगे. बट एरिस्टोटल बिलीव दैट विजडम इज नॉट ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड. इसके लिए बहुत, और एंड सेकेंडली इट डज नॉट end up unifying all other virtues as well. So a person needs to act wisely. Wisdom will be attained through effort, through practical work, again connected with Aristotle's realist philosophy. और अगर आप बाकी virtues को भी attain करने की कोशिश नहीं करेंगे तो they will remain out of reach. In science, Plato tried to do some work on geometry, physics and mathematics, but his work was more exploratory than it was practically applicable. तो इसकी real world implications काफ़ी कम थी. उसने astronomy और biology पे भी काम किया, but वो सारी चीज़ें पहले discuss हो चुकी थी. Didn't really contribute in expanding the body of knowledge. Aristotle, by contrast, is considered to be the first true scientist because he used this scientific method and deductive method जो हमने पहले discuss किया, जिसके अंदर hypothesis to observation and conclusion आता है. His was the first attempt at classifying all forms of life in biology, zoology and botany. Medicine, geology और astronomy में भी जो है उसने काफ़ी contributions की. तो even though Aristotle की सारी discoveries over time reject हो गई, reject in the sense that they proved to be not completely true, however उसने एक scientific basis रख दी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की, कि जिसको पहले आगे आने वाले scientists ने study किया, उसके ऊपर बिल्ड किया, उसको फिर ऑब्जर्व किया और उसको रिजेक्ट किया. बट वो जो एक पैरामीटर और फाउंडेशन एरिस्टोटल ने रखी थी, दैट रियली कंट्रीब्यूटेड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज. एंड फॉर 1000 years, एज आई सेड अर्लियर, कि एरिस्टोटल की लॉजिक को एरिस्टोटल के क्लेम्स को, एरिस्टोटल की स्टडी को, उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. कंप्लीट लेक्चर नियरपियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं. YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का. लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है. तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है. 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है. तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है. अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर. हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.